तो खुशामदीद ख़वातीनो हज़रात, हम वापस आए हैं। अभी मेरा ख्याल है 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। मैं भी I've lost track of time. फहद, आप बताएं अब हम किस नई ताज़ी पे गुफ्तगू करेंगे? जी, वक्त के बारे में, क्योंकि 5 घंटे तो हो गए हुए तो ये भी हमें ना याद ही करें नहीं ना ये यार, ये क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? क्यों हुआ और कब हुआ ये तो यार होना ही नहीं था। ये तो मसला है यार आपके साथ बात करने में कि इतनी दिलचस्प बातें होती हैं कि जी। वक्त का पता नहीं चलता। और हमें यार लगता है कि अभी तो बात शुरू ही हो रही थी, ये तो बस ट्रेलर था यार वाकई में मुझे हर हर वक्त हर बार जब हम ये रिकॉर्ड भी ना करें, ऐसे लगता है कि हमारे आखिर ना एक मकसद होते जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 10 घंटे की फजूल बातें करनी पड़ती। ऐसे ऐसे है हमारे, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे है, मगर ऐसे लगता है। ये तो है ब्रो। ये मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी बात खत्म हुई पर हमें लगा यार हम तो सारी बातें हो गई थी इसलिए खत्म कर रहे हैं। जी जी आमतौर पर होता है ऐसे कि घंटे खत्म हो जाते हैं तो हमें लगता है यार मतलब अब तो जाना ही होगा, अब तो मजबूरी है। जी जी जी, हमेशा ये ज़रूरतें आ जाती, मतलब हमारी बातों की दरमिया ज़िंदगी आ जाती है भाई। बेशक बेशक यार, मतलब मगर पर हमारी सही है बातों में ना मतलब। पूरा ज़िंदगी है भाई। ये बात भी सही है यार। मैंने यार एक सोचा जिस पे हम बात करेंगे, पर मैं काफी भुट हूँ इस वक्त और मैं बिल्कुल भूल गया यार ये क्या मौजूद था। और यार हाँ, अब याद आया मुझे। तो जी। आगाज इससे कहते हैं, it's about the hippie trail. Right. And for those of you who know about the hippie trail, or who don't know about the hippie trail rather, फहद, क्या आपने इसके बारे में सुना जी हुआ जी है या सुना होगा यार? जी जी जाहिर है। जी। तो you know, it's these क्या है कि probably in the 70s I would say Yeah, that this 70s. movement emerged, like the counterculture movement and like the hippie movement, you know. Yeah. People who kind of identified with a lot of Eastern philosophies and kind of just the way of life that exists in many places in the East, you know. Again, popularized by groups like the Beatles, who like, you know, lived that life. And it was a huge thing back then, right? Counterculture. Absolutely. And one thing that emerged out of it. Sorry, no, go ahead. No, go on. I was just agreeing with you. No, it's you know, I find it fascinating. Like I was very interested in a lot of counterculture music, counterculture ideas. It's also a time when like Marxism grew as a movement, you know, and in the U.S. and these guys, like you would see, they identified as like hippies, right? Or like people would call them hippies at least, you know. They just saw themselves as like alternative and having ideas that differ from the majority and that, you know, believe in just a more you know, a peaceful and more egalitarian world. And one thing that they would do was travel to India, Pakistan, and Afghanistan, like that whole region, like to like go and live with locals. Like the Beatles did that as well. They would go to like villages, like, you know, somewhere in Himachal, somewhere in like various villages in the mountains, somewhere in Hunza, you know, and just live with the locals, smoke just with them, just kind of spend like months of the year with them, you know, and just traveling along this trail, you know. And pretty soon, like since more and more people started doing it, it became known as the hippie trail. Like people, it became like a, you know, clear path that all hippies clear, like on their way down, like they go through these towns, like, you know, and man, and you'll be
you'll be surprised at the places that were on the list. Man, I remember seeing Nanga Parbat, in Pakistan. Yeah. And Hunza in Pakistan as well. Yeah. And I think K2 as well, like around that area, like for those who are for the trekkers at least. Yeah. और इंडिया में तो लाजमी है, that जो पूरा belt है, around close to the Nepal border, like Himachal, Uttarakhand, Kashmir, around all of that area. Yeah. Or साथ में in the south they would go karna and other small town Arambol, if you've heard of this place. And तो यार एक ट्रेल सी बन गई थी ना, जहाँ जो भी हिपीज आते थे वो लाजमी था वो ये ट्रेल से होते हुए जाएंगे, ऊपर से अफगानिस्तान के करीब से वो शुरू करेंगे. And जहाँ भी वो जाते थे, they would live with locals. Like, they wouldn't live like tourists. They didn't even think of themselves as tourists, Yeah. कि locals के साथ उनकी ना उठना बैठना हो जाता. They would like live the way that locals do, get used to their way of life, and then it's like an amazing way to live. And अभी भी यार बंदे हैं जो ऐसा करते हैं. They go on the hippie trail. Yeah. But unfortunately, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान में थोड़ा सिक्योरिटी का मसला है, तो पाकिस्तान जाना उनका थोड़ा कम हो गया. मतलब in the 70s they would still go, like hit on the hippie trail. But अभी नेपाल, इंडिया अक्सर ये दो जगह तो आते ही हैं फिर भी, but it's a fascinating movement, and like the places that they go to in Pakistan, those are ones that I would love to. Like हुंजा का तो आपने सुना ही होगा यार कि मतलब कितना, और देखा भी होगा कितना खूबसूरत है. But हाँ bro, hippie trail, hippies के counter culture ख्यालात हैं. जी. तो यार ये तो बड़ी, I don't know, like every place you described is a place I want to go to, right? But जो बंदे वहाँ आते हैं उसकी हिसाब से हम जाने के मन नहीं कर रहा कि like I'll tell you, like Hunza is beautiful, I would definitely go to Hunza, but a lot of the other places, especially in India by the way, are like the kind of places that university student in their last year goes on a trip with their friends, and वो यार ना हिप्पी है ना उसकी कोई सोच है या दिमाग है, वो सिर्फ वक्त ज़ाया करना चाहता है. सही. तो काफ़ी बेमकसद बन गया कि it's become like a tourist spot apart from and the way that they used to live with the locals is really what you're going for. It's not just the scenery where you learn. Like a mountain does not teach you anything. It's the people from the mountains, which people nowadays I think kind of tend to ignore. They don't really look at the local population or what they do. They bring their own culture and try to get through this in that way. Right. No, definitely. But dude, if I could do the hippie trail, frankly I'd do it. But I'd do it, I'd love to do it when there's nobody around. But just on the hippie trail, like Nathia Gali, wo yaar, it's one of the most beautiful places in Pakistan, or bilkul aapke baat hi kareeb hai. And what I'm like falling in love with recently, I'll give you an example. Like, if I could go to Nainital, right, I would rather go to a place that's kind of about 45 kilometers to the north. You know what I mean? Like, for sure. वही बात है और वही scenery है मगर नाम नहीं है. Like, I want to discover something that is like slightly off the record, so
Yeah, I'd love to do the belts, but not do any of the tourist spots. I would love to be honest, I would love to spend a year probably doing that, and just be lost and not be able to be found or anything. I would love to have nothing more on me than like mode of transportation and a backpack with enough clothes to get me, to get me through a week, hopefully. And that's it, man. Like I would do the entire journey, but I wouldn't want to meet other travelers along the way. You know what I mean? I want to meet people who settle down, just them. I don't want to do it. For sure. Yeah, but it's a wonderful No, I idea. feel you, man. Yeah. Dude, man, you put it perfectly, dog. Like 45 kilometers north, Yeah. or like in any direction, that's like the perfect place to go exploring and to really truly experience the place. Yeah. Because you're right, man. These places, as nice as they are, they tend to be magnets for Londe, you know? Like, it's like Londa आपको बहुत दिखेगा वहाँ हर तरफ, you know, Honda. Honda, Londe. Yeah. That was my favorite line, man. Like I can't forget it. यार वैसे ये बात सही है, मतलब अक्सर यहाँ भी जो आपको लौंडे अक्सर होंडे में दिखेंगे यार वाकई है, मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों है, मगर हमेशा ऐसे ही होता है. Dude, it's so funny because my dad used to drive a Honda, and he's like a very like straight, you know, like the exact opposite of a Honda, you know. So it's really weird to me that it became the car of choice for Honda. What? मुझे भी पता नहीं कि आजकल अगर सिविक है आपके पास तो पाकिस्तान में आपकी शादी कोई नहीं करेंगे ऐसे. Yeah, Civic to yeah. Like the first car that every student gets, you know. Yeah. But bro, Honda, yaar, these places are definitely magnets for Londe, you know. But I remember doing exactly what you said, like going on an offbeat track, you know, like to a village that few people go to, and usually spend time in places like those. Yeah. And on one trek, man, I remember like I went to this one like village, right? Like no tourist could tell you the name of this place. Like no one ever goes there. The only other people who were there were like backpackers, like mostly from Germany and Israel, like who were like just hippies, you know. They were all just like उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि मतलब बंदा हिप्पी है, you know. तो उनके अलावा और locals के अलावा और कोई भी नहीं था. It was just backpackers and मतलब ये वाले जो hippie backpackers and locals, you know. और मुझे याद है यार एक रुके ना, we stayed at a guest house, और वहाँ की जो महफिल थी वो मैं आज तक नहीं भूलूंगा. जो रात के वक्त ना हम सब बैठे हुए हैं, एक अंदर जैसे मजलिस जैसी होती है ना, मजलिस जैसी बनाई उन्होंने. सारे लोग हम बैठे हैं बड़े से सर्कल में, और and the owner there is like a local Himachali, you know. He's from like he just has a small guest house there where these guys come to stay, the backpackers. And puri raat yaar, he was playing like Nusrat ki Qawwali. Yeah. और एक बड़ी जहाँ हम पूरे एक सर्कल में बैठ के सारे चिदम फूंक रहे हैं, you know, we're singing chida around the whole circle. और पीछे मतलब नुसरत की यार, you know, all of his best hits, you know, and even Alida Malang, you know, which is like one of my favorites. बहुत कमाल था यार. I mean, he played even like the lesser known and like, you know, just all of the best hits of like Nusrat. बस बड़ा ही कमाल माहौल यार. और बाहर देखें आप तो बिल्कुल पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, and you know, सारे हम लोग भोटे हैं पूरे, you know, just smoking, chilling with like strangers, you know, like locals, and these guys like
these hippies, you know. और दुनिया भर की बातें हो रही हैं हमारी ना, मतलब कुछ ना कुछ तो बात इनसे होती है क्योंकि they're pretty like curious people, you know. और तमाम वो चीजों पे इन रखते हैं क्योंकि उनको they're curious travelers, you know. तो बड़ा कमाल का सीन है यार. मतलब बेशक पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके हैं. चर्च का तो हाँ आपको पता है सीन बहुत ऑन है. और ऐसे इलाके बहुत हैं जहाँ you know उनके जो अपने लौंडे होते हैं जैसे लम्स के या you know क्या कहते हैं ब्रो दूसरा there's a business school as well. सारे जो मैट्रिक के भी लौंडे हैं you know like where they go for to hang out when they're done. तो चिलम का सीन तो वहाँ भी बहुत ऑन है bro, you know. It's वही चर्च पता नहीं इसकी क्या वजह है पर ये पूरा जो पहाड़ी इलाका है वहाँ आपको you know हाँ दोनों बिल्कुल साथ जाते हैं यार. मतलब वो पूरी पहाड़ी जो बेल्ट है ना, मतलब आप उत्तराखंड से लेके हिमाचल कश्मीर और फिर पाकिस्तान का जो कश्मीर आ जाता है फिर all the way up to like you know the northwest and then like that whole region, you know, KPK. ये पूरे इलाके में लोग चर्च पीते हैं bro, you know. And in like the Pahari regions in India, like the Hindu regions, it's like even considered like sacred, you know. And मेरे लिए पहली दफा तो मुझे वाकई में it was like a shock, you know, like how is it that people are smoking it, consuming it, selling it so openly in like a village. I remember going to this one restaurant, you know, by the river, and they gave us a menu, right? And menu पे नीचे पता है क्या लिखा था? It's like menu पे चरस घिसना मना है. No way. And then even in English it said, please don't grind churros on the menu. And I'm like, I took a photo, I swear. I'm like, yeah, you know, people are just, you can smoke there, obviously, but it's like, it was just crazy to me that you go to a cafe, a restaurant, even a restaurant, and anywhere you can smoke a J, you know? तो ये तो यार मैं आपको जरूर कहूँगा कि ये एक ऐसी जगह है, मतलब even if you don't go to like the main spots, like the more traveled to spots, उसके इर्द गिर्द ऐसे तमाम आपको पिंड मिलेंगे जहाँ आप जा सकते हैं और जहाँ ना माहौल भी बहुत आराम का है, चिल का है. but हाँ ब्रो, ये पाकिस्तान में भी ये सीन बहुत ऑन होता था यार. I remember कैसे भाई Kaiser, you know, till like the 70s that like बहुत hippies आते थे उधर भी ना उस side. They would do the same thing that they do like in like Himachal, for example, where just living with the locals and just living like locals, you know. Steve Jobs did it in India as well for a while, like had a sabbatical type, you know, and living in the mountains. Nice. Yeah, man. और ये तो bro, I would like to do something like that in Pakistan, you know, live in these regions with different locals, but अब क्या मसला है कि हालात ऐसे हैं कि everyone's so caught up with their own lives, and ये जो छोटे इलाके हैं, there's a lot of like desperation out there now, you know, with the many crises they're having there. But yeah, एक दिन मतलब ये ख्वाब पूरा होगा, हम कभी जाएंगे यार, you know. पेशावर तो जरूर जाना है और लाहौर बहुत लाजमी है. जी वाकई करना है वही. और I kind of like where you're going with this कि
जो बंदे वक्त ज़ाया करने के लिए करते हैं अपनी ज़िंदगी की मकसद उसमें ही समझ ले, और वाकई ऐसे ही है। मगर यार मुझे पता नहीं कि like as much as I would like to go to a place, right? I would not want to go to it if it is not a place that has the atmosphere that you just described, right? If you show up to even a mountainous area and it's filled with Londab, I would rather, stay at home. You know what I mean? So I feel that. I feel you, man. I think what we But got yeah, to plan definitely, is like, exam week at universities is the perfect time, I guess. Yeah, definitely, man. Like, you can definitely time it so that you go and no one else is really there, or the people who are there are usually just like good travelers, Yeah. But there's also what you described a bit offbeat. Yeah. That's always something you can do. Like go to villages that are less to where थोड़ा मतलब थोड़ा वहाँ पहुँचने में भी काफी थोड़ा काम लगता है. You have to like trek to get there. Yeah. क्योंकि यार ऐसी जगह तो अभी भी है, where you can get the true experience of the place, and it hasn't been like impacted by like tourism as much. Yeah. वो जगह वाकई में बहुत ही यादगार होती हैं. They're really worth checking out. No, I'd like to do it, man, and I'd like to do it with. I don't know how long it would take, but I would like to go on a journey of self-discovery. Same, bro. Same. And I don't know कि ये यार शेड्यूल करने में अभी कुछ मसले है, मगर मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी ज़िंदगी जा रहा है, वक्त तो मिलेगा भाई कि हमें कुछ ज़्यादा करने नहीं है, तो जब आएंगे तो जाएंगे भाई. और वैसे जस्ट ऑन द record, I have no idea who's listening, मगर हम दोनों चरस नहीं पीते हैं. हाँ, ये सिर्फ हम जानते हैं. ऐसे काफ़ी बातें हम तो जानते हैं, मगर सिर्फ बात तो बात है, और बंदे के बात तो आप जानते हैं सिर्फ बात है. वाकई बात बिल्कुल सही कि आपने. ये तो हम इन तमाम चीज़ों का रखते हैं, चाहे वो चीज़ें करते ना हो, पर हमें बस यार हुस्नुल इल्म ही का मतलब है. तो हम ना दुनिया ये तो बात सही है. जी जी. और एक माहौल जरूरी होता है कि माहौल ना हो कि प्लेस, तो ये तो बहुत है कि हम जिस जगह Yeah, buddy. जनाबे आला. Welcome back. Where were we? सुनाए यार, क्या हालात हैं? What time is it there? It's 12:30. Oh shit, dude. No, it's alright. Don't you?
Yeah, I'm not Cinderella, don't worry. Eh, यार वैसे मेरी मेरी यार मतलब बड़ी, मैं इन लोगों से नफरत करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे बंदा है ना कि अभी तो ज़्यादा नहीं मगर एक ज़माना था जब हमारे सारे दोस्त इकट्ठे होते थे और हमेशा ये 9 बजे सिंड्रेला आ जाती थी कि यार मेरे अब्बू मेरे मुझे मार डालेगा। और मुझे समझ आते थे नहीं भाई कि यार इस उम्र में तुम्हें क्या होना है, मतलब तू जो बाहर है तू बाकी लोगों के लिए मतलब ख़तरा है तो शायद oh, शायद bro. शायद इसलिए आपकी अम्मी अब्बू आपको घर बुला रहे कि कल न्यूज़ में ये ना देखो कि आपकी बंदे की वजह से किसी को कुछ हुआ, ये नहीं कि आपको कुछ होंगे। मगर यार तो 12:30 हो गए और क्या करो बट नहीं ये तो वैसे बहुत यादगार लाइन है यार, जो बंदी कहती है कि ना मुझे घर पहुंचता है वरना अब्बू मार डालेंगे। जी जी जी, हमें हमारे ज़िंदगी में आज तक बंदी नहीं कहा, सिर्फ बंदे कहा है ये। oh, bro. हाँ जी यार वैसे बात सही है यार आपकी, कोई कोई बंदे तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे हाँ इधर जी के पर I think it's tough because you can't really have like a childhood or like an adolescence when it's like that, yeah true when you're not free to do the things you want. खासकर बंदों के लिए यार, हाँ यार वो आज़ादी बहुत ज़रूरी है, जी। मगर ऐसे कि काफ़ी बंदे की ज़िंदगी ऐसे है कि आधे तो वो उनकी वालदे के हुक्म पर और बाकी तो उसकी बीवी के हुक्म पर गुजर जाता है। मगर हम तो ऐसे नहीं भाई, हमारे दोनों नहीं आगे। हम तो बिल्कुल जी हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं है यार, जी हम तो जी बिल्कुल हम पे ना कोई दबाव है, ना कोई हमें कुछ कहने जी वाला है। वैसे हम तो बस यार अपनी सुनते हैं जी जी जी, मगर कोई हुक्म भी करने नहीं चाहते भाई, ये भी बात है कि मतलब हम अगर हमारी ख्वाहिश है ना कि कोई आ जाओ और कहूँ हमसे कि यार 12 से पहले घर आ जाना, ये भी ना आएंगे ऐसे अभी। ये तो बड़ा सही है, सही बात है। जी हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है हाँ भाई। हाँ भाई, वाकई में मतलब कोई अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाए हमारे लिए। हाँ हाँ पर हाँ ब्रो, ये तो सीन आपने बहुत सही सुनाया है कि हम बस यू नो एक दिन आएंगी कोई बंदियां जो हमारा भी इंतजार करेंगी, जी जी जो सोचेंगी कि यार मेरा शोहर किधर है इस वक्त, वो अभी तक घर हाँ क्यों नहीं आया। हाँ हाँ यार ख्वाहिशात मिलवा दो, सही है सही है। पर भाई बस यही है कि फिलहाल तो बस ख्वाब देख सकते हैं, पर जी इंशाल्लाह एक दिन ये हकीकत होगी खुदा और करे। और हम ये ख्वाब जिएंगे। हाँ जी, और हमारे ख्वाब की लड़की के साथ, वैसे भी लड़की तो मिल सकता है मगर ख्वाब की लड़की से। वाकई बिल्कुल बिल्कुल यार, पसंद की लड़की मिलना और मुश्किल काम होता है, जी जी पर सही है यार, मतलब ये भी हमारी एक दिन किस्मत बदलेगी। हम हम होंगे कामयाब एक दिन। यार मार डाला। मैं जब भी ये सुनता हूँ मुझे ये लगता है कि ये गाने इतने गाने की हिसाब से मैं कामयाब नहीं बना। यार ये कौन से गाना है कि क्यों एक दिन हमें सिखा रहे, क्यों आज नहीं, मतलब तुम कौन से इंतजार कर रहे, आज ही कर लो भाई, हर दिन ये किसी दिन गाएगा तो कब हो जाएंगे कामयाब। वही तो यार, बहुत सही किए कि ये बस सोच में रह गए कि एक हाँ दिन जी जरूर होंगे। हाँ जी, ये पता नहीं ये वो मोदी वाला एक दिन है, आएंगे नहीं अच्छे दिन। वो वाले दिन तो आएंगे नहीं जी जी ब्रो। क्या करें भाई, मतलब हमें यार थोड़े वक्त मिलवा दो, हम पूरे ज़माने के लुट जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे अपने आप की बेइज्जती करेंगे।
मगर यार जिंदगी तो गुजार है, ये वाकई सच है। सही में यार, हमारी लाइफ गार्डन गार्डन है ब्रो। मतलब जो चीजें हैं वो कहते हैं ना कि जी जी। you know that it's better to be happy with what you have Yeah. than become unhappy by trying to get more. हाँ हाँ, ये मतलब ये जो चरस स्पीकर ये सब लिखता है ना, उसको ये समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में दो चॉइसेस सिर्फ नहीं होते। मतलब हर चीज़ आपके पास हो सकता है। मतलब जो भी फिलॉसफी कहने आते हैं ना, मुझे सिर्फ इतना इतना मैं सिर्फ उसको बताना चाहता हूँ कि अगर यार तुमने मुकम्मल समझी ना, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। और ये यार जिंदगी की मकसद है कि ये बात तो है। द मोर यू नो यू डोंट नो। तो आजकल मैं प्रिटेंड भी करता ना नहीं हूँ कि मुझे पता ही नहीं भाई, मतलब क्या चल रहा है पता नहीं यार। हमारे कुछ ना कुछ तो चलते होंगे, हमने आज तक समझा नहीं, किसी दिन समझेगा तो बताएगा, मगर हमें भी पता नहीं। हम ऐसे कि गाने बज रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, जो गा रहा है उसे नहीं पता वो क्या गा रहा है, हमें भी नहीं पता ये कौन सा गाना है, सिर्फ ऐश कर रहे हैं भाई। मतलब माहौल माहौल ये अच्छा है, बात तो है। चल रहा है। बस ब्रो, हाँ भी ये बात तो है यार कि मैंने भी ये तो फैसला कर लिया है कि ज्यादा सोच में पड़ना भी अच्छी बात नहीं होती। तो जी मतलब सबसे बेहतरीन चीज तो ये रहती है कि आप बस अपनी to enjoy, to हाँ be जी happy, to do what makes you happy. हाँ पर जी ये तो वाकई में मैंने देखा है ब्रो कि ना कई लोग in just the process of accumulating, वो उसमें इतना यार उसी में फंस जाते हैं, and they never really even get time to like enjoy life. जी। मुझे उस सर्कल में नहीं फंसना है, in that cycle. हाँ हाँ जी जहाँ yeah तो जैसा कि आप कह रहे थे कि I'd love to travel for like a year, explore different places. उस तरह का मुझे बेशक कुछ करना है यार, कि जैसे पूरा एक साल ना अपने आप घूमे फिरें और कमाते भी रहें, पर to do something like where you can work from home or work from your laptop, yeah ताकि आप मतलब चलते फिरते भी काम कर सकें। I agree बड़ा कमाल हो गया यार, especially like some place like France and Belgium. I would love to travel and work in these places. I can see what you're saying, but like to go back to what you were saying, मुझे ये सिर्फ इतना बताना कि मेरे जो नए साल के फैसले हैं, ये मतलब ये है कि मुझे बेवकूफ़ बनना है। My New Year's resolution is to become an idiot. मुझे सोचना ही नहीं भाई, मुझे समझ ही नहीं आना है कुछ, मतलब मुझे यही बिल्कुल करना है। यार। हाँ यार, मुझे स्कूबीडो बनना भाई। मैं तो तंग गई हूँ कि कामयाब बनकर, उसने कभी गाया नहीं, वो कभी कामयाब बनेगी नहीं, ये उसे बेशक पता है, हमें वो चाहिए यार। यार ये तो मैं समझ सकता हूँ, जो स्कूबी डुकुना का जो एक लाइफस्टाइल है, जी जी कोई ना I'm कोई तो very पाल like लेंगे भाई, कोई काम के आए या ना आए, कोई तो स्कूबी स्नैक्स लेकर आएंगे। हमें क्या, खाना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, कोई देख लेंगे। हकायक है ब्रो, ऐसा ही है बेशक। पर मैं तो ये कह सकता हूँ ब्रो कि स्कूबी डुकुना का जो लाइफ है, इट्स वेरी, यू हैव पीस ऑफ माइंड, सुकून तो मिलता है आपको, जी और सुकून से बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती है। और ये आपके पास, मैंने बहुत से बंदे देखे हैं who have like every advantage in the book, yeah हर चीज है उनके पास, पर सुकून फिर भी नहीं है, like और उसके भी उनकी वजूहात बहुत होंगे, either they're in like a very stressful job or उनकी पर्सनल लाइफ स्ट्रेसफुल है, और बहुत कुछ होने के बावजूद भी उनके पास वो एक चीज नहीं है जो वाकई इतनी अहमियत रखती है। जी बात तो ये तो बात सही है कि स्कूबी डुकुना कम से कम सुकून में तो रहते हैं। जी और
हमने तो गलत मतलब तरक्की कर कर गलती कर ली यार ज़िंदगी में। मतलब पहले ही ये मौके ये मतलब जगह पर आ सकते थे तो यार सब हो जाते थे अब तक, मगर कोई कोई मसला नहीं है। अब भी बेवकूफ़ बनने की वक्त है, मगर Never too late. yeah, never too late to become an idiot. But यार वैसे अम, आजकल मुझे भी पता नहीं यार कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि क्या बताओ कि कल क्या है आज क्या है। ये मतलब एक ज़माना था जब हमारे हर साल ये कैलेंडर आता था कि ये तेरी साल है, सही, इसमें इतना तो तुम्हें करना है, बाकी जो वक्त है जो अपने आप की मर्ज़ी कर लो। आजकल ऐसे नहीं है भाई कि कैलेंडर से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे है कि पूरी ज़िंदगी हमारे है, जो भी करनी है कर सकते हैं। मगर जैसे आपने कहा कि एक साल तो हम कर सकते हैं भाई, अभी भी कर सकते थे, पिछले 10 साल में कभी भी हम एक साल तो पूरे सफ़र में निकल सकते थे, मगर किया नहीं। क्यों किया नहीं? कि ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ होता है, और ये जिम्मेदारियाँ से क्या मिलते? कुछ नहीं मिलते। जिम्मेदारियाँ जब ख़त्म होते हैं हमारी ख्वाहिश ये है कि एक साल ऐसे गुजरूं। मगर यार बात यह है कि ज़िंदगी में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। और मुझे मतलब मैं ये काफ़ी सीरियसली लेता अगर मेरी काम या अपनी ज़िंदगी काफ़ी सीरियस था, काफ़ी स्ट्रेसफुल था। मगर ये भी नहीं है भाई, मुझे ये वेकेशन के लिए मतलब ऐसे है कि लीव लेने के लिए पहले जॉब चाहिए, सही। मुझे जो जो ज़रूरत है ये सफ़र के लिए, मुझे वो आज तक महसूस नहीं हुआ कि वो जगह पर आ गई ज़िंदगी। मगर पता नहीं, मुझे भी करना है भाई, मगर ज़िम्मेदार होने के बाद तो कर नहीं सकता, तो देखते हैं। सही बात है यार। आई मीन जिम्मेदारियां बहुत हैं हमारी, ये भी बात सही है। और इस वक्त तो फिलहाल तो ये नहीं हो सकता है, जी पर मेरा ख्याल है कि यार एक साल में या एक साल से कम में भी हाँ ये मुमकिन होगा, जी आ, और किया जा सकता है मतलब। पर जैसा कि आपने कहा यार, लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम काम में मसरूफियत तो बहुत होती है, काम भी बहुत होते हैं साल भर, जी पर कम से कम साल में 3 महीने तो आई डोंट वर्क, एंड आई एम स्टिल गेटिंग पेड फॉर इट। नाइस तो नाइस ये बड़ी यार एक सुकून की बात है कि कम से कम वो 3 महीने हर साल ना, अगर इफ आई कंटिन्यू टू डू दिस लॉन्ग टर्म, या तो कम से कम साल के वो 3 महीने तो आपको मिलेंगे जब आप वाकई कुछ भी कर सकते हो, and बड़ी अच्छी even if you go हाँ some place and live there for 2 months, या it's still a long time to spend somewhere, इट इज़ uh, या तो ये ख्वाहिशात मुझे लगता है दोनों साथ में भी पूरे किए जा सकते हैं, alongside having like working full time and still having like some like career goals. या um, इसके साथ साथ यार कम से कम ये 2 महीने जो समर के होंगे, और एक महीना या winter break and March break combined. या ये साल के 3 महीने में you can still like go exploring and discover new things and do the things that really like you like doing with your leisure time. True, man. Yeah, and it's a perfect setup. Like, I think you've got it right, but देखना पड़ेगा भाई कि मतलब यार ये ज़िंदगी की कोई मतलब यकीन नहीं कर सकता है कि ये हमें बात भी है। जो भी लगेगा ना कि ऐसे होंगे वो होते नहीं, और जो लगता है कि ये कभी नहीं होने वो तो बेशुमार हो रहा है। तो पता नहीं भाई। हमेशा यार, हमेशा। हाँ, नहीं, ये भी बात आपकी सही है यार। इसमें भी कोई शक नहीं कि things rarely ever go as planned. या यार ये हमारे सलमान भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं प्लान करता। सही तो
मुझे उस वक्त लगा था ये इंसान काफ़ी बेवकूफ़ है, सही, Actually, मगर आजकल लगता है कि तो बात में तो बात है भाई। हाँ bro, सल्लू भाई ने भी क्योंकि he's lived a challenging life, you know. Yeah. तो इन तो उनके पास भी बहुत है वैसे जी पर जी। पर सही यार, you know, प्लान बनाना भी कई बार it rarely goes as planned, पर Yeah. कोई ऐसे आपके goals तो होने चाहिए, you know, कि यार ये एक चीज है जो मुझे करनी है, you know, even if it's for at some personal level, you know, not like a career goal, but like a personal goal कि ये एक ऐसा शहर है जिससे, you know, that I've never been to, I've never seen, I've only heard of or seen pictures and videos. पर ये एक ऐसा शहर है जिससे जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, और एक दिन मैं चाहूंगा कि ये शहर मैं लाइव देखूं, you know. I see it, like I go there and I get to see it for myself. आपके लिए अहमदाबाद तो ये एक ऐसा शहर होगा ये जरूर. मेरे लिए भी ऐसे कई शहर हैं दुनिया में, कई ऐसे इलाके हैं जो मैं जिंदगी में एक दफा देखना चाहता हूँ, और इसमें कोई कोई ऐसे इलाके हैं जो, you know, they've sorry, they've been on that list for like a very long time. Right. तो ये यार ऐसी जगह हैं जो वाकई यार going to them is like a personal goal, the way that people have career goals, you know, कि ये कैसी चीज है यार जो वाकई, you know, it would be my dream come true if I got to experience that, you know. इस तरह की कोई प्लानिंग तो करनी चाहिए बंदे को कि यार ये एक दिन मैं ये तो बिल्कुल हासिल करूंगा, you know, because if not, then what's the point even of, you know, working so hard and like, you know, like putting in all this work if you don't have these big like, you know, things that make you happy. No, I agree with you, man. Like what you mentioned about afterward and एक शहर ऐसे होने, ये तो बात सही है यार कि मतलब एक तो शहर ऐसे होने चाहिए कि जब लौट जाने तो थोड़े से थोड़ी भी गम महसूस होता है कि I don't want to leave this place. और कभी कभी मतलब छोटे उम्र में होता था कि हमें ये लगता था कि यार मुझे दोबारा वहाँ जाना है, कि मेरे कज़िन से मिलना है, ऐसे कुछ लगता था, वो भी नहीं लगता, मगर वो एहसास यार बड़ी खूबसूरत है कि जो भी एक महीने की वेकेशन के लिए यार हम पूरे 11 महीने बर्दाश्त करता हो, तो यार ये भी होना ज़रूर है, लाजिम है. अगर नहीं यार ये तो ना होगा ब्रो. जी यार वैसे एक फजूल की कहानी है, तो मैंने सोचा कि आपको बताओ मगर भूल गया. But I'll tell you, yeah, कि 2 days ago, 2 days ago I was out shopping. Yeah, I was actually at a cafe. Which cafe? Oh, dude, by the way, there's this wonderful cafe in Musharraf that we missed. The next time you're here, I'll take you. That's got the best cheesecake. What's the place called? It's called Said Del 1923. It's from Italy, and they've got like a branch. They're really good with chocolate. Damn, that sounds dank, dude. All the places you took me were like an 11 out of 10, man. I swear to God. I had some like of the dankest coffee I've had there. Right, man. I generally tend to deal with just 11s, and talking away your Bobby, but like they have really good hot chocolate as well. Like they're really famous for the chocolate. Like they're in London as well. You know, it's not a franchise, but it's like quite big. So if you're ever around the city that's got one of them, you should try it. But definitely here, whenever you're here. But day before, I was at God damn it, I can't remember where I was. This is going to annoy me, man.
Yeah, so I was at Said earlier, which is Vendome. Yeah, so after, right, it's like in a mall. Our place Vendome, which is like named after the French open air mall, and has nothing to do with anything in Qatar. But after we went to the cafe, it was me and Walda. So she had to buy some makeup. Right now, like that mall has one of the biggest Sephora's here. It's like 4 floors. And I've been there multiple times, unfortunately. So I was inside, right, and I was wearing a black coat, right. um, and यार वैसे उसके अंदर तो मतलब उसकी सामने कुछ नहीं है और उसके अंदर करने की कुछ नहीं है. तो मैं वहाँ खड़ा था एक मतलब एस्केलेटर के सामने, सही. तो मैं खड़ा था और मैं यार फ़ोन भी यार चेक करने की मन नहीं कर रहा था, तो मैं यूँ खड़ा था कि आई एम लीनिंग ऑन लाइक अ वॉल एंड सामने एस्केलेटर्स है. और यार काफ़ी मतलब जगह तो फुल है कि सब की सब बंदियाँ अंदर है, सही. और एक भी खूबसूरत नहीं, सही. Don't ask me how I Mm-hmm. know that. Like I keep saying I don't look at women, but like I know. तो तो मैं वहाँ खड़ा था and this girl who's like our age comes up to me, right? And उसकी मुझे मतलब देखकर ही लगा कि इसे कुछ मतलब she needs some help, yeah. I apologize for being this weird. Like it makes sense that she's in a makeup store, yeah. So Oh man. yeah, I apologize, but had to be made. But she comes up to me and she asks, like, do you know what's upstairs, right? And I've been to this store so many times that I know it inside out. So I told her, yeah, it's fragrances upstairs. So she's like, oh, I don't need those. So at this point, I don't know what she's on about. So I said, all right, what are you telling me? But I didn't say that, right? So she asked me, do you know where the eyeshadow is? And again, I've been there way too many times, So I told her, listen, it's on this floor, but it's at the back, like right there. And what generally happens is if you're at a Sephora, like a person will come and stand with you the whole time and guide you along, right? So she was kind of confused. She looked at me for a while, and that's when I kind of figured what she was thinking. So she asked me, she was kind of surprised that I wasn't helping her. So she asked me, do you know what kind of color would suit me? So I told her, like, whatever color contrasts with your skin, I think will be a good choice. So she looks at me like, like, what's wrong with you? Like, are you, there's a line from Archer which is like, are you hourly? And she just looks at me like, तू कौन से retard मतलब what kind of quotes are you here on, like what's your disability, are you retarded? She's looking at me like that, and that's when I look back at her and I'm just smiling, and that's when she realizes that I don't work there, right? And then she goes, oh my god, I'm so sorry, I assumed you worked here. And I said, no, it's alright, I knew that's what you assumed. So she asked me, so why'd you help me? And I said, हम वैसे भी फारिग था और जिसकी जवाब आप चाहते थे वो हमें पता भी था, तो हमने सोचा कि मदद करेंगे तुम्हारा. तो शी इज़ लाइक ऑलराइट, एंड देन शी गिव्स मी लाइक योर वियर्ड लुक एंड देन वॉक्स अवे. बट लाइक यार मेरी ज़िंदगी अभी ऐसे हुए है कि मुझे पता है कि बेमकसद की काम कर रहे हैं और हम उसमें मज़े ले रहे हैं भाई. Bhai, matlab, that was really nice the way you way you handled that though, man. Like, she didn't sound very nice, but good on you for being the bigger guy and helping her out. No, I'm not offended. Like I'm not offended. She thought I worked there, but like also she wasn't very mean. Like you know what I mean. हमारे यार वो भी standard सिर्फ आए होते. ये normally बंदी था, मगर मेरे जो बंदी से मिलने हैं ना, उससे मिलकर ऐसे मतलब एहसास होता है कि ज़िंदगी की हर एहसास छोटे लगता है.
कि जिसकी बारे में मैंने आज आपको बताया कि यार शायद अभी मतलब it's been 20 hours since I saw that photograph of us and I can't get it out of my mind. Like ऐसी बंदी तो जिंदगी में तो बाकी हर बंदी तो नालायक ही लगेंगे, मगर वो वाकई में यार बड़ी अच्छी बंदी होते हुए होंगे, मुझे पता नहीं, मुझे ताल्लुक नहीं ऐसी बंदियों से, मगर अच्छे थे यार, मतलब सिर्फ हमारी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं। नहीं नहीं यार, मैं ऐसा बता सकता हूँ, you know what I mean? But यार ये कहानियां होती हैं हमारी लाइफ में ना, हमारे because we meet so many different people. जी आपको बहुत अलग अलग तमाम मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे आपको। हाँ यार सब 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 जो मिल सकते हैं उससे हम मिली भाई, मगर फिर भी आजकल मतलब मुझे पता नहीं हमारे कौन से मतलब शो चल रहा है और कौन ये देख रहा है, मगर यार काफ़ी एंटरटेनिंग है ये तो बात है। ये तो है यार, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी लाइफ में एंटरटेनिंग रही है यार, कि हम एंटरटेनमेंट में ही यकीन करते हैं। हाँ यार, इसके अलावा तो हमें कोई चीज़ की परवाह है नहीं यार, बेशक बेशक, हम जो छोटे उम्र से ये स्टैंड अप कर रहे थे वही है। बेशक यार, वापस we came full circle to our grade 6 stand-ups. जी Professor Guttu Swami. dude, I wish we had some like video or anything from that time, but we don't. I know, that would have been iconic, man. Rewatching that stuff, like from that era. Kya zamane the, bro. Or Rishabh, man, I can't believe, like, where he's at now. He's a pilot, right? Yeah. कमाल यार, मतलब लोगों की यार आपके साथ उठते बैठते थे, and you would never have expected him to be flying planes. True, मगर यार शायद अगर हम उसकी ज़िंदगी में नहीं थे तो वो ये भी करते नहीं होता कि अगर ये भी, हाँ वैसे I think the credit goes to us for training him. And पहले हम दो फिर उसकी माँ बाप जिंदगी के लिए तैयार किया। जी we opened his eyes. Life skills 101. वाकई यार, मतलब जिंदगी के लिए उसको हमने तैयार किया, और उसको जो कोई भी वो है आज, ये सब हमारी वजह से है जी। और मुझे लगता है उसकी तनख्वाह की एक हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए भाई। हाँ ब्रो, हर पेचेक का 10% तो हमें मिलना चाहिए। हाँ जी वैसे ये मतलब कौन सोचे होंगे कि ये बंदे तो पायलट निकलेंगे, अगर हमने इसकी ज़िंदगी इतने बर्बाद नहीं की थी तो क्यों बनता है। बिल्कुल यार, क्योंकि उड़ान लेने के लिए पहले the best place to start an उड़ान is from rock bottom, and we helped him get there, You pushed him off the cliff. क्योंकि सबसे ऊंचा वही जा सकता है जो पहले सबसे नीचे था, और उसको नीचे गिराने में तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी ब्रो। यार ये तो अभी गोलमाल ही फिल्म लग रहा है कि हम यार, मगर पता नहीं यार, मगर बंदे ने काफी तरक्की की, मगर फिर भी मुझे लगता नहीं कि यार अगर मैं उसकी फ्लाइट में था ना और मतलब मेरे पास वक्त था तो भाई मैं भागता, ये बेशक है। मैं भी यार, क्योंकि पता नहीं यार, ऋषभ को हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं, जो पुराना जी बड़ी आप किसी को बिल्कुल यार, ऐसे प्लेन पे तो मैं कभी ना बैठूं ब्रो। मैं दूर से फोटो खींच लूंगा ये तो, पर मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ये वही बंदा है जो 7th में फ्लाइट सिमुलेटर खेलता है, तो वो खेल के वो पायलट बना है। हाँ जी तो ऐसे बंदे के प्लेन में बैठना इतना सही नहीं रहेगा।
हाँ यार, वाकई वाकई तो मैं भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था। आज मैं तो ये नहीं बता रहा कि मतलब जंग में मैं सिर्फ यूं नहीं जाता हूँ ना, ऐसे बंदे ने काफ़ी सीरियस ले ली जो वीडियो गेम था। वाकई यार मतलब पर मैंने देखा है ब्रो, बहुत से लोग पायलट बने हैं हमारे हमारे वक्त के, पता है जो हाँ जी। मुझे पता नहीं था कि पहले देख के लगता था कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम होता होगा, यू नो, लाइक टू हाँ टेक अ प्लेन ऑफ लैंड इट, हाँ but और है भी काफी हद तक, you know, just like the amount of pressure, you know, to get it right. yeah You can't be someone who like succumbs to pressure very easily, you know. yeah uh, तो हाँ ब्रो, ये बात तो है, पर वाकई ब्रो, पायलट उसकी उड़ान तभी शुरू हुई जब हमने उसको नीचे नीचे गिराया था। जी जी जी। अगर मतलब I think there's a like bird that pushes its offspring off the nest so that it learns how to fly. हम वैसे भी but हाँ यार, हम हाँ it was just tough love, you know, that's just how we were. जी जी जी। मगर यार मुझे वैसे जानवरों से उतने प्यार नहीं होता था, मगर आपके भाभी तो बड़ी जानवरों से प्यार करते हैं, इसलिए तो हमारे साथ है भाई। ओह, और मैं सिर्फ फजूल की बातें करने के लिए आया हूँ, मगर अक्सर में वो जानवरों से काफ़ी प्यार करता है। और इसलिए मैं भी तो आजकल काफ़ी करता हूँ। वरना तो यार पहले मैं तो वो बंदा था, पता है, जो मतलब जिसकी पास गाड़ी है तो हम गाड़ी नहीं यार, मतलब जो भी ये यार, वैसे हमारे ज़िंदगी में ऐसे तो बंदे थे जिसने हॉबी बना दी जानवरों को, मतलब रूफ से नीचे गिरवाना, ऐसे चीज़ें तो जलवाना, ये सब तो हमारे आदतें थे। तो हम उतने भी बेवकूफ़ नहीं थे, मगर आजकल तो बड़ी प्यार करता हूँ जानवरों से। नहीं यार, माशाल्लाह, बहुत बहुत कमाल की बात किया आपने, और मेरा भी कुछ ऐसा ही तजुर्बा रहा है, जी। पर जानवरों की तरफ नॉट एज मच, पर बच्चों की तरफ अच्छा। पहले मैं वैसा बंदा होता था जिसको लगता था यार कि आई वुड मुझे लगता है बच्चों के साथ, मतलब मेरी what do I even have in common with बच्चे, you know, Right. like अगर मैं किसी के साथ उठना बैठना मेरा हो रहा है और हमारी कोई बातचीत हो रही है, you want it to be someone you can share something with, you know, some topic, something to talk about. तो बच्चों से यार मेरा कुछ खास ऐसा लगाव होता नहीं था पहले यार। बहुत से लोग होते हैं जी। who really like kids, you know, they love spending time with young little ones. उनके लिए उनकी जिंदगी का ख्वाब होता है कि यार हमारा एक दिन अपनी यार, you know, I'll have my own offspring, you know, my own kids. तो मेरा यार कभी ऐसा कोई सीन नहीं था कि I was the opposite, you know, someone who जिसको बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब जी। but धीरे धीरे, you know, like now that I've started working with them and working with kids of all ages, like from very young to like middle school, I've really started to like, you know, working with them and really like spending time with them as well, you know, like you really see like an innocence and like a childlike you know world innocence that that makes you like think the world is not that bad, you know. Dude, that's beautiful, and it's also like a bombshell because I've known you for the longest time, and I've always thought, I've always known that you weren't really all that into kids, but like for that to change is a very big thing, and I'm proud of you, buddy. And but we're almost at the hour mark. This is episode 17. It's a big bombshell to end on, but like if you ask me, I would just say the day that cars changed, or probably the days that changed our life. But what would you like to call this one?
Let's see, dude. Bombshells. Babies and bombshells. Nice. Ladies and gentlemen, this is Pointless Stories with Karshan FS, episode 17, Babies and